Ji, Assalamu alaikum, Mohan. Please write your roll number in the chat. I repeat for all of you, please write your roll number in the chat. We will start our class shortly. Please write your roll numbers in the chat. Thank you. Ji, let's start our class. But I would be repeating the yesterday's lecture because it was so much distortion in the internet yesterday. So it is the next topic is a planning process group. Now, if you go for introduction, the definition is planning process group consists of those processes which are performed to ठीक है उस पे क्या perform होता है number one is establish the total scope of the effort अभी हम प्रोजेक्ट अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें हमारा टोटल स्कोप क्या होगा ठीक है एंड देन देयर इज डिफाइंड एंड रिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिफाइन करना उनको समझना और कीप ऑन रिफाइनिंग देम लाइक इफ देयर इज एनी करेक्शन थोड़ी बहुत उसमें जो करेक्शन आ रही है कीप ऑन रिफाइनिंग देम The third point is develop the course of action required to attain those objectives. मतलब कि कौन कौन से एक्शन हम करेंगे ताकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर एग्जांपल जस्ट गो फॉर रिजर्वायर इंजीनियरिंग अच्छा रिजर्वायर इंजीनियरिंग में आपने क्या करना है आपने सिमुलेशन करनी है कि रिजर्वायर हाउ रिजर्वायर विल बिहेव आफ्टर 10 इयर्स उसके लिए आपको क्या चाहिए obviously you need the current data you need the history you need to simulate it Acha, under what terms and conditions you need to simulate it either you are simulating for reservoir for the production go for reservoir what type of fluid do you have oil you have gas whatever
एंड लाइकवाइज तो जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा टू डेवलप इट, मतलब हमें कौन कौन से एक्शंस करने हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो ये सारा मतलब बेसिकली ये हुआ कि आपने एक चीज़ का प्लान किया, अब आपको उसको प्रोसेस करना है ताकि वो चीज़ अचीव हो। तो ये उसकी डेफिनेशन आ जाती है ना। इफ़ यू गो फॉर द मेजर आउटपुट, आपको इसमें क्या मिलेगा, जैसे हम सीएलओस पढ़ते हैं ना कि कोर्स लर्निंग आउटकम्स क्या हैं या प्रोजेक्ट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। तो इसमें आपका आउटपुट क्या होगा, आपका आउटकम क्या होगा। यू वुड बी हैविंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अगर आप प्रॉपरली इसको प्रोसेस करेंगे, प्रॉपर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा। 6 हफ्ते के बाद एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, 6 महीने के बाद होना है या 6 साल के बाद, तो उसका एक प्रॉपर प्लान होगा। और दूसरी बात ये कि आपके पास प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनती जाएगी प्रोसेस में। स्टार्टिंग कब से किया, आप 1 महीना हो गया फॉर एग्जाम्पल, आप आपने भी जो जो प्रोसेस किया आप सबकी डॉक्यूमेंटेशन करते हुए जा रहे हैं। आपके पास ये प्लान है कि नेक्स्ट मंथ क्या करना है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ एंड देन नेक्स्ट ईयर वट एवर। So you have the project documents. These two things which are like major output. इसका मतलब ये नहीं कि it is only limited to these two. No, it is not limited to these two. It is the major outputs. Now the project management plan and project documents explore all the aspects of ये जो जो documents हमने बनाए, इसमें every aspect of the scope, time, cost, क्वालिटी, कम्युनिकेशन, रिस्क एंड प्रोक्योरमेंट्स, इनके सब मतलब डिटेल्स इसमें आ जाती हैं कि आइदर आप अपने स्कोप के अंडर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या आप टाइमली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एक जो हमने स्टार्टिंग में चीज़ पढ़ी थी कि आप एक ग्राफ बनाते हैं, आप एक टेबल बनाते हैं कि 6 माह के बाद ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, 1 साल के बाद ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, 2 साल के बाद ये चीज़ अचीव हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या वो टाइमली हो रही है, नहीं हो रही। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी बनते जाएंगे और आपको उसको चेक करना भी ईजी रहेगा कि वाकई हुआ या नहीं हुआ। फिर कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आपने इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी थी, क्या वो एस्टिमेटेड कॉस्ट अचीव हो रही है, नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कॉस्ट मतलब कि हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो फॉर एग्जाम्पल इट वॉज $1 बिलियन, नाउ इट इज एक्सीडिंग, क्या वो एक्सीड तो नहीं हो रही। लाइकवाइज यू गो फॉर द क्वालिटी, whatever the things, whatever the project you are going to complete, जैसे हम ड्रिलिंग में आ जाते हैं, हम कंप्लीशन में आ जाते हैं, we go for the work over jobs and there are many other things in the petroleum engineering also. So क्या वो क्वालिटी वाइज चीज़ें सही आ रही हैं, नहीं आ रही। then you go for the communication. Now in communication what we do, like for example whatever you are doing, are you communicating with your team members, are you communicating with your heads। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपकी कम्युनिकेशन कहीं नहीं होगी, लाइक इफ़ यू हैव अ वीक कम्युनिकेशन, तो आप कहीं मिस्टेक भी कर रहे होंगे तो कोई आपको रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा। लाइक इफ़ यू आर नॉट शेयरिंग विथ योर हेड्स प्रॉपरली, तो हाउ विल दे विल रेक्टिफाई यू। किसी को आप बताएंगे तो वही समझेगा ना कि नहीं यार आप यहाँ गलती कर रहे हो, आप इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो। ओके, देन देयर इज रिस्क एंड प्रोक्योरमेंट्स। लाइक आप रिस्क चेक करते हुए आ रहे हो, तो एज यू नो इन द like in drilling there is a very high risk of the blowout and other things। आप उसको चेक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, एंड ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन। आई रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज राइट योर रोल नंबर इन द चैट। Okay, moving towards the next slide, there is rolling wave planning, progressive elaboration. Now this progressive detailing of the project management plan is often called the rolling wave planning, indicating that the planning and documentation are iterative and ongoing processes। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस के हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसमें आपकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है,
वो प्रोग्रेस आपकी इन द राइट हाउ टू से डायरेक्शन इट इज गोइंग ऑन और इट इज गोइंग रॉन्ग डायरेक्शन. So it is called the rolling wave planning. Changes to project management plan and project documents. Now updates are arising from approved changes. मैंने आपको बात समझाई लास्ट स्लाइड में कि यू कम्युनिकेशन मस्ट बी वेरी गुड. आप अपने हेड्स को बता रहे हो नहीं बता रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी मीटिंग में किसी प्रेजेंटेशन में ये बात बताई कि यहाँ तक हमने अचीव किया है, नेक्स्ट हमारा ये टारगेट है, वहाँ आपको किसी ने कहा कि यार ये आपकी मिस्टेक आ रही है, या आजकल फॉर एग्जांपल आपकी मिस्टेक भी नहीं है लेकिन द हाउ टू से द न्यू टेक्नोलॉजी आजकल ये आ गई, हम अगर इसको अडॉप्ट कर लें टाइमली तो हो सकता है हमारा ये प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म हो जाए, कम कॉस्ट में ख़त्म हो जाए. तो उसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट मूव करोगे, लाइक यू आर राइटिंग ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, दिस इज न्यू सजेशन इन दिस मीटिंग, so that is why we are going to use this new technology, and then that document will be approved. So it is writing to updates arising from the approved changes during the project may significantly impact parts of the project management plan and the project documents. वो जो आपके पास चेंजेस आई, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए, वो हो सकता है आपके प्लान को मतलब इफेक्ट करें, इम्पैक्ट करें. क्यों इम्पैक्ट करेंगे, जिस मैंने आपको उसकी रीज़न बताई कि आपको कोई ये भी कह सकता है कि यार ये न्यू टेक्नोलॉजी है, कोई आपको ये भी कह सकता है कि वी कैन कॉल द सर्विस कंपनी बिफोर. मतलब फॉर एग्जांपल आप एक रिजर्वायर पे काम कर रहे हैं, आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, इट इज़ प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, so like you have the plan for calling the service company after 5 years for any work or job. अब यहाँ पे कोई आपको ये भी सजेशन दे सकता है कि यार आप 5 साल के बाद नहीं, इनको 4 साल के बाद बुला लो. The question will arise why. At that time maybe he or she can tell you कि यार अगर हम 4 साल के बाद इनको बुला लेंगे तो हमें प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो जाएगी, we will get good production in this time, और many other reasons. तो वो सारी चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, और अगर वो आप कर भी रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने उसको एक्सेप्ट किया एंड यू आर डूइंग इट, सो इट मीन्स योर प्लान इज चेंज्ड. वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ, इट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स में चेंजिंग आई. And the next point is involvement of appropriate stakeholders. The project team should encourage involvement of all the appropriate stakeholders in planning. For example, you are E&P company, you are working in E&P company. तो वहाँ पे आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप उन सबको इंगेज करो. E&P में आपके पास जियोफिजिस्ट आ जाते हैं, आपके पास जियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, आपके पास रिजर्वायर इंजीनियर आ जाते हैं, आपके पास ड्रिलिंग है, प्रोडक्शन है, एंड मैनी अदर हेड्स. सर्विस कंपनी कॉल करनी है, कब कॉल करनी है, क्यों कॉल करनी है, वॉट एवर. इफ़ यू आर इन सर्विस कंपनी तो वहाँ पर आपके जो हेड्स आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द कंपनी यू हैव द फ्लोर मैन, you have the company man, and there are many others. So these all are stakeholders. So you must involve all of them. I repeat for all of you, please write your roll number in the chat because total participants in the meeting now are 22. It means almost 10 to 15 students are absent. अच्छा, moving towards the next slide. Limitation on extent of plan. अब इसकी limitation क्या हो सकती है? Now, since the feedback and refinement process cannot continue indefinitely, procedures set by the organization dictate when the initial planning effort ends. अब ऐसे नहीं हो सकता कि ये चीज़ चलती रहे इंडेफिनेटली, चलती रहे, आपके पास फीडबैक आ रहा है और आप उसको रिफाइन करते जा रहे हो, आखिरकार उसको आपने कहीं ना कहीं जाके स्टॉप लगाना होगा. बिकॉज इनिशियल प्लानिंग जो भी हुई, या आप अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आपका प्रोजेक्ट एंड होने वाला है, अभी आपके पास 3 महीने रह गए, अभी आपके पास 6 महीने रह गए, तो ऑब्वियसली इट विल एंड अप.
because in the last 3 months, in the last 6 months, or whatever the last era is, in that time you have to complete कि हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर देनी है, आपने उसकी प्रेजेंटेशन दे दी और इट इज़ ऑल completed, इट इज़ ऑल finished. At the end it cannot be again and again refined. अच्छा, these processes will be affected by the mostly, मतलब ये किससे अफेक्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इन 4 चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, मोस्टली. Number 1, what the nature of the project is. Number 2, the established project boundaries. Number 3 is appropriate monitoring and controlling activities. And the number 4 is as well as the environment in which the project will be performed. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि लाइक इन आवर कंट्री वी हैव वेरी गुड एनवायरनमेंट in Sindh province, in Punjab province, also in KPK. But the situation varies in Balochistan. So environment is changed. आप सिचुएशन वेरी हो गई, इन्वायरमेंट वेरी हो गया, तो ऑब्वियसली आपकी जो एक्टिविटीज़ होंगी उनमें इफेक्ट पड़ेगा. अच्छा, प्लीज़ वेट, गिव मी 2 minutes सो दैट आई कैन ओपन योर अटेंडेंस पोर्टल और मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर दूँ. As far as yesterday's attendance is concerned, yesterday I marked present for all of you. Please write your roll number in the chat. I will check it. अगर किसी ने रोल नंबर लिख लिया है तो I will mark his attendance. Once आपने रोल नंबर लिख लिया है तो it's fine. No need to write it again. Roll number 15 is in the meeting.
Roll number 40. If you are in the meeting, please write your roll number in the chat. Next is roll number 47. If you are in the meeting, please write your roll number in the chat. Roll number 5960 and 61. If you are in the meeting, please write your roll number in the chat. Otherwise, I will mark you absent. ओके जी, आई एम कॉलिंग द एब्सेंट नंबर्स. अगर कोई मिस्टेकली एब्सेंट हो रहा है तो प्लीज़ अपना रोल नंबर चैट में लिख लीजिएगा. सो द एब्सेंटीज आर रोल नंबर 15 दानियाल, then the roll number 540 Kashif, then we have roll number 47 Mumtaz Ali, then we have 58596061 and Trumpet 46. If you are in the class, please write your roll number in the chat. Okay, let's continue the lecture. I will wait for these students for 5 to 10 minutes if they are coming, so we can write the roll number in the, like I mark them present. So moving towards the next slide, the intra-process interaction in planning process group. अब इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट आपकी टीम्स हैं, सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. आपने नोट किया होगा अक्सर औकात इन पेट्रोलियम कंपनीज whenever you are going for the lunch, whenever you are going for the dinner, अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, फॉर एग्जांपल इफ यू एवर वेंट टू एनी फील्ड, तो उसमें ये होता है कि प्रोसेस वाले बंदे भी होते हैं, प्रोडक्शन वाले भी होते हैं, मार्केटिंग वाले भी होते हैं, और कुछ और कंपनीज उसमें मतलब कुछ और डिपार्टमेंट्स उसमें होते हैं. तो वो लोग अगर आपको लंच पे या डिनर पे मिलते हैं तो आपको कहते हैं कि सर आपकी पूरा डॉक्यूमेंट नहीं आया या आपका पूरा डॉक्यूमेंट आना था, उसका क्या हुआ, उसमें मैंने आपको करेक्शन कही थी, एक सजेशन कही थी, उसमें क्या हुआ था. तो वो आपसे पूछें यार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से कोई है बैठा हुआ है, अगर आप नहीं भी होते तो आप किसी कोली को बता देते हैं कि सर आपके इस डॉक्यूमेंट में या आपके इस फला इस टास्क को आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा ऐसे चेंज कर लें.
प्रोसेस वाले की बात बता देते हैं, मार्केटिंग वाले कुछ बता देते हैं, या और जो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अक्सर औक़ात ये होता है कि लाइक इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन बिटवीन यू बिटवीन द टीम्स। उस इंटरेक्शन में ये हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ आप भूल भी गए हैं या आपने किसी को कही थी, तो इट्स बेटर टू इंटरैक्ट विद देम अगेन। हो सकता है कि वो टीम भूल गई हो या वो फला भूल गया हो जिसको आपने कहा। हो सकता है उसने नोट डाउन नहीं किया हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव एन इंटरेक्शन विद ईच अदर। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप अपने कोलीग के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने हेड्स के साथ एक इंटरेक्शन रखें। वो इंटरेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर औक़ात कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर आपने किसी से पूछ लिया, तो हो सकता है आपको कोई समझा दे कि यार इसको ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे करो। सो इन दिस वे इट इम्प्रूव्ड। वो चीज़ एक इम्प्रूव हो जाती है, उसमें एक मतलब मिस्टेक नहीं भी है तो थोड़ा बहुत जो एरर आ रहा है वो भी कम हो जाता है। सो डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप मतलब इंटरेक्शन नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इंटरेक्शन इज़ वेरी गुड। And the next point is the documentation of the iterations. The results of the iterations are documented as updates to the project management plan or project documents. जो भी आपकी चेंजिंग आई, जो भी आप अब यहाँ पे इटरेशंस ऐसे यूज़ हो रही हैं जैसे आपने मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसमें आप लोग इटरेशंस करते हैं। यू डू मोर एंड मोर इटरेशंस टू रिड्यूस द एरर। तो यहाँ पे इटरेशंस का मतलब ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल जो भी आपने उसमें चेंजिंग की, जो भी आपने उसमें अपडेट किया, जैसे मैंने आपको एक बात कही कि आपको कोई समझा सकता है, आपका कोई एरर कम कर सकता है। ये नहीं कह रहा है कि आप गलती कर रहे हो, लेकिन आपका एरर हो रहा है। यू आर हैविंग अ 5% एरर, मे बी इट कैन बी रिड्यूस्ड टू द 4%, मे बी इट कैन बी रिड्यूस्ड टू द 3%। तो वो जो भी आपने अपडेट्स की हैं, जो भी आपकी इटरेशंस हुई हैं, वो आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में आप उसको अपडेट कर देते हो, आप उसको अटैच कर देते हो कि यार हमने इसको क्यों अपडेट किया, कितना अपडेट किया, इसमें क्या चेंजिंग की। तो ये आप सारी डॉक्यूमेंटेशन बना देते हैं। अच्छा, इन पेट्रोलियम फील्ड्स you all know there is a rotation of 21 days and then I think 15 days or something like that one. तो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक लॉग बुक मेंटेन करनी होती है, क्योंकि जब आप घर चले गए हो तो आपका जो रिलीवर आया है उसको कैसे पता चलेगा कि आपने एक हफ्ता पहले क्या किया था, आपकी कौन सी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या बातें हुई। मतलब कि चलिए सारी बातें नहीं, लेकिन जो काम की बातें थी वो आपने ज़रूर नोट डाउन करनी है, आपने उसको फाइलिंग करनी है ताकि वो आके देखेगा आपका रिलीवर, फिर वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को नोट डाउन कर रहा होगा। जब वो घर जाएगा रोटेशन पे, जब आप ऑन फील्ड होंगे, तो आप उस बुक में देखते हैं कि सर आपने ये चीज़ लिखी थी, तो हमने फिर इसको आगे ऐसे-ऐसे किया। दिस इज़ द वे इट गोज़ ऑन। तो उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन, ये अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उसमें ये नहीं लिखेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या चेंजिंग है? रोल नंबर 59 and 15। ओके प्लीज़ वेट। रोल नंबर 59 नीक मोहम्मद, ठीक है। 15 दानियाल। Now still we have 40 absent. We have 47. We have 60 Sayyid Muhammad Mohsin. We have 61 Wahid. If you are in the class, please write your roll number in the chat. Actually, yesterday I was discussing with you okay, when we will be back on the physical classes after Eid. So I will try my best to give you some case studies. मतलब पेट्रोलियम फील्ड में हम केस स्टडीज उठा लेंगे, प्रोडक्शन की या ड्रिलिंग की,
आप भी अगर अपनी तरफ से कोई इनपुट देना चाहें तो यू आर वेलकम। In those case studies, first I will make the teams of the 3 or 4 students. You will be asked to उसके आप प्रोजेक्ट बनाएं, ये प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, आप इसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। अब जो जो टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं क्लास में, उसमें जो जो चार्ट्स आ रहे हैं, जो जो ग्राफ्स आ रहे हैं, वो आपने सब बनाने हैं। फर्स्ट असाइनमेंट हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू सबमिट इट टू मी इन रिटन फॉर्म, एंड देन नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल मेक इट इंडिविजुअली। वही केस स्टडीज फिर इंडिविजुअली हम बना लेंगे फॉर ऑल ऑफ यू। उसमें वही बात हुई कि आपने कैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, आपकी क्या प्लानिंग होगी, और जितने लेक्चर्स फिर हम वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आज तक हमने अगर ये प्रोसेस वाला कंप्लीट कर लिया है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको असाइनमेंट देता हूँ, तो मैं यहाँ तक दूंगा। फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स कर रहे हैं, फिर जब आपको इंडिविजुअल असाइनमेंट मिलेगी, तो ऑब्वियसली उसमें आपने कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी होंगी। और दूसरी बात ये है कि जो भी क्लास में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इट इज़ ऑनलाइन क्लास, आई विल चेक योर रजिस्टर्स, इट शुड बी रिटन। आप अपने अल्फाज में उसको लिखेंगे कि आपने क्लास में क्या पढ़ा था, आप उसको समझें। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू आस्क मी, बट आई वांट यू टू बी इंगेज्ड कि प्रोजेक्ट की आप कैसे प्लानिंग करेंगे, उसकी कैसे प्रोसेस करेंगे। एंड देन आई विल बी आस्किंग यू, लाइक फॉर एग्जांपल कोई चेंजिंग आपने की, तो आपने उसको क्या उसको अपडेट किया नहीं किया। ऐसे में आपको कुछ केस स्टडीज बना के दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी इन द ग्रुप्स एंड देन इट विल बी इंडिविजुअली। जी, moving towards the next slide. Now, developed project management plan is the process of, ये किस चीज़ का प्रोसेस, इसमें क्या होता है। Now, documenting the actions necessary to define, prepare, integrate and coordinate all subsidiary plans. अब कुछ प्लान्स आपके ऐसे होते हैं कि सब्सिडियरी आते हैं, किसी और ने आपको एक बात कह दी, और सम प्लान्स आर देयर व्हिच आर वर्किंग एज अ सब्सिडियरी विद दैट। मतलब कि वो मेन प्लान आपका नहीं है, लेकिन आपने सोचा हुआ था कि यार अगर ऐसे होगा तो हम ऐसे भी कर लेंगे। तो उनकी एक डॉक्यूमेंटेशन के कौन से एक्शन होंगे, नेसेसरी एक्शन होंगे, उसको डिफाइन करना, उन एक्शंस को उनको प्रिपेयर करना, इंटीग्रेट करना। दिस इज ऑल द डेवलपिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। The next point is the project management plan becomes the primary source of information for how the project will be। प्रोजेक्ट हमारा प्लान कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा, अच्छा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे होगी, फिर एट द एंड वो एंड अप कैसे होगा या वो क्लोज कैसे होगा। क्योंकि ये मोस्टली आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसमें काफ़ी चेंजिंग आती हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। Sometimes the things are not in your control. For example, there was a COVID for 2 years before, 2 years, 3 years, जो भी टाइम था। So in that time, the whole world was stopped. It was halted. तो उस टाइम अगर आपका कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसमें डिले आ जाएगा। तो द डिले इज मॉनिटर्ड, आप उसको मॉनिटर करते हो कि डिले क्यों आ रहा है, या उसमें एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। फिर आप कोशिश करते हो कि उसको कम करो, उसको कंट्रोल करो। क्योंकि अगर इस डिले ज़्यादा आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट वगैरह सब बढ़ जाएगी।
सो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं कि आपके प्रोजेक्ट का क्या प्लान है, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हो। अगर आपने देखा होगा, अगर आप में से कोई कभी रिग पे गया होगा, तो जो कंपनी मैन बैठता है, जो उसकी ऑफिस है, तो उसके लैपटॉप के जस्ट ऊपर लाइक एक शीशा लगा हुआ था। द मिरर इज देयर, फ्रॉम देयर ही कैन डायरेक्टली लुक टू द रिग। तो रिग पे कंप्लीटली, और यू कैन से लाइक एट एवरी टाइम वो वहाँ देख रहा होता है कि वहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। मतलब ही इज़ मॉनिटरिंग। जैसे ही थोड़ा भी कहीं उसको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो उधर ही उनको कह देता है कि यार आप इसको ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। लाइक ही कैन कन्वे द मैसेज ड्यू टू एनी मीन्स। आरओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्यूरिंग ड्रिलिंग। फॉर एग्जांपल द आरओपी प्लांट वो अचीव नहीं हो रहा, तो वो वही पूछता है कि यार आरओपी कम क्यों हुआ। क्योंकि अगर आरओपी कम होगा तो ऑब्वियसली हमारी ड्रिलिंग डिले हो जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर उसको ये आंसर मिलता है कि सर हार्ड फॉर्मेशन है या सॉफ्ट फॉर्मेशन है, तो वो वहीं पे उसको कंट्रोल करता है कि अच्छा हम कौन सी बिट यूज़ कर रहे हैं। जो बिट इसके लिए ज़रूरी थी कि हम वही बिट यूज़ कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं हम कोई और बिट यूज़ कर रहे हैं। हाउ अबाउट ड्रिलिंग मड, और फिर जो कटिंग्स ऊपर आ रही है, क्या वो कटिंग्स प्रॉपर आ रही है, नहीं आ रही है। और ऐसी जो भी चीज़ें होती है वो वहीं पे चेक कर रहा होता है। सो वॉट एवर द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग ऑन, सबसे पहले उसकी प्लानिंग आ जाती है कि मैंने आपको कहा नहीं, सो आर पता होता है कि मैंने क्या आर ओ पी यहाँ पे अचीव करना है आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 2 डेज या वॉट एवर द टाइम इज़। फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, लाइक ड्रिलिंग चल रही है, टाइम पे नहीं चल रही है। समटाइम्स द ड्रिलिंग स्टॉप्स, तो वहीं पे वो कहता है कि ड्रिलिंग क्यों स्टॉप हुई, क्या प्रॉब्लम आया। ठीक है, एंड देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस कर देते तो ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विल डिले। अच्छा, अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो ऑब्वियसली आपका बजट बढ़ जाएगा, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, and obviously you will be getting email from head office in a few minutes or maybe in 1 or 2 day कि यार क्यों डिले हो रहा है। सो यू हैव टू आंसर, यू हैव टू सेटिस्फाई योर हैट्स। फिर वहाँ पे वही बात आ गई कि आप इंटरेक्शन कैसे है, आपकी कम्युनिकेशन कैसे है। सो दिस ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी देयर इज अ टेबल। इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या मिलेगा। On the left side you can see there is inputs, the project charter, output from planning processes, enterprise environmental factors, organization process assets। आप ये दो पॉइंट्स छोड़ भी दें, आप अगर फर्स्ट दो पॉइंट्स को भी देख लें तो प्रोजेक्ट चार्टर क्या है और आपका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, और इसमें आपको मिलेगा क्या, यू विल बी हैविंग योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। आपका प्लान टाइमली बनता जाएगा। आपका जो प्लान है आप उसको चेक करते जाएंगे, अगर उसमें कुछ रिफाइनमेंट आ रही है, कुछ चेंजिंग आ रही है, तो अपडेट होती जाएगी। क्योंकि देखें, कोई चीज़ अगर आपने अपडेट करनी है और आपने अपडेट नहीं की, तो हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि इन पेट्रोलियम फील्ड देयर इज़ वन रिलीवर, देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन द फील्ड। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो उसको क्या पता कि आपको 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले क्या सजेशन मिली थी, क्या चेंजिंग आपने की थी। वो तो फिर उसको मतलब यूज़ ही नहीं करेगा, वो तो अपने हिसाब से चल रहा होगा। तो ऑब्वियसली देन इट विल बी रॉन्ग। तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, जो आपकी फ़ाइल बनती है, तो आपकी वो फ़ाइल अपडेट होती जाती है। I repeat the attendance for the absent students. Please write your roll number in the chat.
Acha, if I'm not wrong, today is the last class. Maybe I think we are not going to have any class on Monday. Let's see. If it is last class, so I will mark your all of attendance. आज शाम तक मैं आपको आपका अटेंडेंस मार्क कर दूंगा. And I will request all of you to please be very much careful about your attendance. Ji, moving towards the next slide. Now, collect requirements is the process of defining and documenting stakeholders needs to meet the project objectives. अब इसमें देख लें what you have on the left side, what you have in the inputs. You have the project charter, you have the stakeholder register, and what you get, you can see on the right side there is a requirements documentation, requirements management plan, requirements traceability matrix. आपके पास डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आपके पास प्लान बनता है, एंड व्हाट इज ट्रेसएबिलिटी मैट्रिक्स. जैसे हमने एक चार्ट्स पढ़े थे, आपकी कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप उसको कैसे ट्रेस करोगे, आप उसको कैसे मार्क करेंगे. तो आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा. आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा, लाइक यू हैव यूज्ड द मैट्रिक्स. एग्जैक्ट वो मैट्रिक्स यहाँ नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट वो आ जाता है. इफ़ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक इन द फर्स्ट स्टेप पार्ट 3, तो आप उसी पॉइंट को पिक करते हो और उसी को आप रेक्टिफाई करते हो. तो ये आपके पास एक आउटपुट्स बन रहे होते हैं, एंड दिस आर ऑल इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेक होल्डर्स. आप स्टेक होल्डर्स रजिस्टर में चीज़ मेंटेन करते हो. So this is all the collecting requirements, and in a large umbrella it is in the process group. Moving towards the next slide, define scope. क्या है स्कोप को डिफाइन करना? फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि यार आप स्कोप को डिफाइन करें, तो 2 मिनट के लिए आप सोचेंगे कि यार क्या है स्कोप, व्हाट इज स्कोप. इसमें अच्छा स्कोप अगर मुझे समझ में आ रहा है तो उसमें मैं क्या डिफाइन करूँ. सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. आपका जो भी प्रोजेक्ट है आपने उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बना ली. डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ मीन्स व्हाट वर्क विल बी डन. क्या काम होगा, ड्रिलिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, वर्क और जॉब होगी, कौन सी होगी. एंड नोट दैट द वर्क टू बी डन इंक्लूड्स बोथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज. प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कैसे हो रही है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, फिर जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी उसकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी. अगर आपकी ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इट विल बी कंप्लीटेड. अगर आपकी वर्क और जॉब है तो कौन सी है, व्हाट विल यू गेट. परफोरेशन जॉब हो रही है तो वो कैसे होगी, सिमुलेशन जॉब हो रही है तो कैसे हो रही है. So this all comes under the umbrella of the scope. अगर आपको कोई ये कहे कि यार आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आप उसके स्कोप डिफाइन करो, तो आप ये बताओगे कि यार उसमें क्या होना है, उसकी क्या मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होगी, उसमें एट द एंड व्हाट वी विल गेट. आपकी सिंपल एग्जांपल, आजकल आप लोग एफ कर रहे हो, तो आपका स्कोप क्या है. लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन EOR, some of the students are working in drilling, some of the students are working in machine learning, some of the students are working in production. आपका एक स्कोप आ गया. उसमें फिर आप क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हो. आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, उन एक्सपेरिमेंट्स में आप क्या परफॉर्म कर रहे हो. एट द लास्ट आपको क्या मिल रहा है, कौन सी वैल्यू मिली. फिर एट द एंड जो भी आपका FIP का टॉपिक है उसका क्या फ़ायदा है. सो दिस इज़ ऑल ऑफ योर स्कोप. ऊपर आपका एक स्कोप है.
ऐसे नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट ईओआर पे काम कर रहा है और वो कहता है एट द एंड के सर हमें मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम बना लिया, तो वो अपने स्कोप से आउट ऑफ स्कोप चला गया। ऐसे भी नहीं हो सकता कि समवन इज वर्किंग इन मशीन लर्निंग या एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एट द एंड वो आगे कहे कि सर मैंने रिजर्वायर की सिमुलेशन कर दी। सो यू हैव टू बी इन योर स्कोप। So let me see. Absentees are there or they have joined the meeting. So the absentees for the today's class are roll number 40, roll number 47, roll number 58, ये तो आते नहीं है, roll number 60, 61 and 46. सर 40 ने चैट में अटेंडेंस लगाई हुई है, 40 is उसने there. बाद में लगाई थी थोड़ी देर से। ठीक है जी, 40 की हो गई। अच्छा 47 and 58 तो नहीं आता, 60 and 61. ठीक है, आई विल वेट फॉर देम सम टाइम, लेट्स होप। हो सकता है कोई नेट का इशू आ रहा हो, अदरवाइज आई विल मार्क देम एब्सेंट। अच्छा ठीक है, इट्स ऑल फ्रॉम टुडे। Inshallah, see you after Eid. If you are not having the class on Monday, if we are having class on Monday, so let's meet you on Monday.